4 इंग्लिश phrases you are going to love. Number 1, I am on it. इसका मतलब है मैं तुम्हारे ही काम में लगा हूं, मैं वही कर रहा हूं. सपोज आपका बॉस आपसे कहे क्या प्रेजेंटेशन रेडी है, इज द प्रेजेंटेशन रेडी, देन यू विल रिप्लाई आई एम ऑन इट सर, मैं उसी में लगा हुआ हूं. नंबर 2, साउंड्स गुड. ये हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं ये सही है, ये ठीक है. सपोज मुझे मेरा फ्रेंड कॉल करे और कहे चलो आज शाम को मिलते हैं, फिर मूवी देखने चलेंगे, एंड आई विल से दैट साउंड्स गुड. नंबर 3, नो वरीज. इसे आप सिंपल नो प्रॉब्लम से रिप्लेस कर सकते हैं. इसका मतलब होता है कोई बात नहीं. नंबर 4, टेक योर टाइम. आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. जब मेरे स्टूडेंट कोई टास्क कर रहे होते हैं तो मैंने बोलता हूँ टेक योर टाइम, नो रश, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. चलिए अब इन्हीं फ्रेजेस का यूज करके आपस में थोड़ी बात कर लेते हैं. आई रीड सेंटेंसेज इन रेड एंड यू रीड द सेंटेंसेज इन ब्लू. हे, कैन वी मीट टुमारो अराउंड 4 PM टू रिवाइज द चैप्टर? Sounds good. I'm on it. No worries. I'll grab a coffee while I wait. Haha. See you then.